Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your host, English commentator, official English commentator of J&K Qualifiers League, Baba Nisar, welcoming you all and hope you all are doing well by the grace of Almighty. And here we go. We are just ready for the match number 30. And this is all-important semi-final number 2 of this J&K Qualifiers League organized by A&N channel out here in Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. Already we have got yesterday one finalist in the form of MLA Gymkhana defeating the likes of T-Star Cricket Club by a margin of 5 wickets. And here we just waiting for the second finalist of J&K Qualifiers League. The second semi-final between Friends 11 Pulwama, captained by Mr. Shirazwani, and Pattan Pirates Cricket Club, captained by Mr. Mohsin. They are just going a battle out here in the very venue of Ghani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. We're just all ready for the toss. With us, we've got the match officials along with editor-in-chief A&N News Channel, Mr. Tariq Ahmed Bhatt Sahab, who also does the job as chief organizer of this J&K Qualifiers League. We've got the captains with us as well, and I believe Tariq Sahab has got the coin in his hands. It's going to be the call of Shirazwani from Friends 11 Pulwama. Let's see, it's tail. It's tail. Shiraz, मुबारक आपको मैच ये टॉस आपने जीता, अहम मैच है, सेमीफाइनल है, आपका क्या फैसला रहेगा? हमारा फैसला है हम पहले बैटिंग करेंगे सर। बैटिंग की यहाँ पर कोई खास वजह? बैटिंग इसलिए करेंगे इनकी बॉलिंग अच्छी है, हम चेज पे नहीं जाएंगे, हम टारगेट ही देंगे, देखेंगे क्या है। अच्छा, स्कोर की जब बात करेंगे, कौन सा स्कोर आपकी नजर में है जो आप यहाँ पे पोज करना चाहोगे? 100 से 190 तक जाएंगे। कोई चेंजेस आपकी टीम में? हाँ, हमारी टीम में एक चेंज है, आदिल 50 और फैजान आया है और इसके बदले में बाबर और यावर घर पे बैठा। बात करेंगे जो पहली एक फाइनलिस्ट हमें यहाँ पे मिला है, MLA जिमखाना, काफी तगड़ी टीम है, तो आप चाहोगे कि फाइनल में पहुंचना? ये कौन सी बात है, जो भी आएगा खेलने वो चाहेगा ये कि हम फाइनल में पहुंचे। हमारा भी यही है कि हम फाइनल में आए, फिर देखेंगे क्या। चलिए, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मोहसिन, टफ लक लूजिंग द टॉस एंड यू हैव टू बॉल। जी, वैसे हम चाहते थे कि हम बॉल ही करें आज, तो इंशाल्लाह हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 100 या 100 अबो या उस रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उससे नीचे ही, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि फिर बैटिंग अच्छी जो डू आफ्टर 4 मैच जो टीम इंशाल्लाह वी डू बेस्ट एंड विन दिस मैच करेंगे। जावेद जड्डू की आपकी टीम में आए, एक इम्पैक्ट प्लेयर है, एक एज ऑलराउंडर भी खेलते हैं, खासतौर से जब उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन की बात होती है तो ऑलवेज एन इन्फ्लुएंस, जब उनके इम्पैक्ट की बात करेंगे, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेयर। हाँ, ही इज ग्रेट। अंडर 19 खेले हुए, नेशनल खेले हुए, शायद रांझी भी खेला हुआ है, शायद मैच कुछ खेले, तो सही बात है, जो हमारे बाकी प्लेयर उनको एक्सपोजर मिलेगा जड्डू से, तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करेंगे हमें मैच जीत जाए। सेमीफाइनल का मैच है, कोई प्रेशर आपकी टीम पे? नहीं, हम प्रेशर के बगैर खेलेंगे इंशाल्लाह। प्रेशर है ही, सेमीफाइनल की गेम है, बड़ी गेम है, हमारी कोशिश ये हम अपना 100% देंगे, फिर अल्लाह तक कि वो क्या देगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द सेमीफाइनल। सो द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, कैप्टन Friends 11 Pulwama, Mr. Shirazwani, has won the toss, and without taking any more of the time, he just decided to go bat first in his all-important semi-final. We will be just back after break. Till then, you just give your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome once again on the sets of A&N News channel, and this is the second semi-final of J&K Qualifiers League out here at Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. Everything is set and we are done with the toss as well. Friends 11 Pulwama captain Shirazwani just won the toss, and without taking any hesitation he just elected to bat first. Couple of changes being made in both the sides. If we talk about Pattan Pirates, one of the topmost all-rounders of the valley, Javed Jaddu, just gets his entry, and he just gets his entry at the time when his team needed him more. Pattan Pirates players out there in the middle just getting ready to take their concern and respective fielding spots. I'm your host,
English commentator Baba Nisar, welcomed by one more official commentator. There is Mr. Saklan. Saklan, welcome to the box. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आज एक बड़ा मुकाबला रहेगा. फ्रेंड्स सलाम पुलवामा वर्सेस पटन पायरेट्स के बीच. पहला सेमीफाइनल जीता था एमएलए जिमखाना ने. अब ये दूसरा सेमीफाइनल है. बड़ा मुकाबला है और आज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले. जावेद जडू को इन किया गया है प्लेइंग 11 में और एक अच्छा मूव रहेगा. और वहीं से अगर हम फ्रेंड्स सलाम पुलवामा की बात करें, ये भी एक खिलाड़ी काशिफ मिस कर रहे हैं और इन्होंने एक खिलाड़ी को वहाँ पे उनकी जगह दी गई है. Kashif not playing, I believe, for Prince 11 Pulwama, but the captain did mention on the toss, around 180, 190, they would love to put on the board and just give some kinds of pressure. Let's see how far they will just reach to that score. And out walk the two openers. Left and right hand combination as usual, Mr. Javed Malik and Mehran Pandit. And Mehran, if we talk about that last match he played, he just got run out. He was very, very disappointed. And they will be hoping some best from the man. Javed Malik is also doing some great performances, going good. And they will just try to go some great. बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए मेहरा लेफ्टी की कि आज एक अच्छी पारी खेले, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं. आज ज़रूरत है आपकी टीम को. अगर यहाँ से हारे तो टाटा बाय बाय हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से जीतेंगे तो फाइनल्स में जगह बनाएंगे और एमएलए जिमखाना के साथ 23 को दो हाथ करेंगे. And let's make vigilant to all the viewers. The final is scheduled day after tomorrow. That's 23rd of August, Wednesday. And it's going to kickstart exactly 10 a.m. sharp in the morning. MLA Gymkhana already cementing the place in the finals. Yesterday just defeating T-Star Cricket Club by a margin of 5 wickets. The Jamal Baba once again just got over the line with the man of the match, 2 back-to-back man of the matches. Let's talk about Danish Kullu. He has already got 2 back-to-back man of the matches and 2 hat-tricks. I believe he's going to have a great influence on the very semi-final. बिल्कुल दानिश कुल्लू एक शानदार खिलाड़ी उभर के आए हैं. 2 हैट्रिक्स ले चुके हैं. तो पहली गेंद शुरू होने को है और उठाया है. शुरुआत हुई है. 6 रन के लिए डिस्पैच किया है. पहली गेंद खराब की आदिल ने और सही नसीब दी जावेद मलिक ने. And this is a dream start. This is indeed a dream start. Just bowled it short. And Javed was always great at playing those uppercuts. He just was trying to make sure he hits it over backward point, but he made it sail over third man and a 6 on the very first ball. That is a wonderful start. That's Adil now streaming in from the side screen and good ball again. Good carry, good bounce. Let's see what will be the behavior of the pitch today. Let's see, will fast bowlers get some assistance or will we seeing spinner just getting some assistance and having Javed Jiddu in the side? Definitely they will be having a bit of a confidence more in the bowling side. Javed Jiddu, one of the top most rated left-arm spinners of the valley. In goes Adil once again. Good ball, just making sure. Javed just comes behind the line and he plays it back along the track, not for the runs. Apart from wicketkeeper, wherever slips in place. A deep third man, a gully, a backward point. Rather, I will take it straight point. There is a cover, there is a mid-off on the onside, a mid-on, a short 5 leg, and there is a deep mid-wicket as well. Once again, good ball. Just making sure he just pitches the ball on the good length spot. And eventually not going for the runs. Knows that we've already got 6 of the very first ball. And Friends 11 Pulwama, a very balanced side. बिल्कुल काफ़ी बैलेंस साइड नज़र आ रही है. आज आदिल 50 को जगह मिली है प्लेइंग 11 में और एक हैंडी ऑलराउंडर है वो. लेकिन अभी तक अगर हम इस गेंदबाजी की बात, पहले 6 उसके बाद अच्छा कमबैक हुआ है और जावेद स्वर में क्या कुछ करेंगे. कलाइयों का शानदार इस्तेमाल किया लेकिन प्रोडक्शन पीछे मौजूद है. कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे. अभी भी एक गेंद का आना बाकी है. 6 बगैर किसी नुकसान के फ्रेंड्स सलाम पुलवामा टॉस जीत कर बल्लेबाजी करते हुए. Captain Shiraz did mention on the toss they would just love to pose around 180, 190. And so far
Got a good start on the very first ball for hitting a 6, and now there has been a good comeback. And it's going to be the last ball of the very first over, Adil. Very good ball. Wicket keeper missing it. And friends 11 Pulwama will not miss it. It was going at pace. And pace got better of the keeper as well. It got over the gloves. Just touching the gloves, not grabbing it properly. And it just got over the fence for 4. 10 of the over. Friends 11 Pulwama after winning the toss and batting first. There you see in the replay. That was very quick ball. These runs have to be stopped at any cost. और शुरुआत 10 बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर में और पेस का शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लाइन गलत है आदिल की। पिछले मैच में इन्होंने काफी कमाल की गेंदबाजी की थी. Yes, he bowled a magical spell if we talk about that kind of a match. And eventually he just caught the wickets as well. And today he was taken for 10 runs already. Let's see who is going to bowl the next over from that side screen end. I believe it's going to be Umar. Going to accompany rather Adil. But eventually a very good start as far as Prince 11 Pulwama concerned. 10 of the over. बिल्कुल शुरुआत अच्छी मिली है 10 बगैर किसी नुकसान के. उमर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है. अब उमर कैसी गेंदबाजी करेंगे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ फ्रंट 11 पुलवामा उतरी थी. आज मेरा लेफ्टी को एक अच्छी पारी खेलनी होगी. Oh my goodness, dropped. Can you believe it? Mehran Pandit is dropped on the very first ball. And he was going deep in the crease, trying to flick it beautifully. There was a protection, there was a fielder on the short fine leg. Eventually he just drops and he just drops the catch, drops the match as well, I believe. और बिल्कुल मेहरा लेफ्टी का कैच आप छोड़ रहे हैं और ये बड़े खिलाड़ी अब जाते हैं कि बड़ी पारी कैसे खेलनी है, लेकिन शॉर्ट फाइनल पे जो खिलाड़ी थे उनसे बड़ी गलती हुई. I believe if you are playing semi-finals, margins of errors are always very low. You can't afford to drop that. This time a very controlled shot. Mehran lefty is such a good flicker of the ball. And we should give that kind of appreciation to the captaincy having a fielder. And eventually just dropped the catch, and Pandit, he just got on. It's 15 and Javed now back on the strike. Here goes Umar. Good shot, beautiful shot. Just got onto the top of the bounce. It was a quick ball and he jumps onto the feet and he just cuts it beautifully. Just making sure he just bisecting the gap, and that's a beautiful shot from Javed. That is what I was telling you. He's known for just those square cuts. बिल्कुल कट काफी अच्छा खेलते हैं और वो जो इंटरनवी फ्रंट 11 पुलवामा ने दिखाया वो काफी शानदार है. Once again in the same direction. This time I believe it's not going to go to the distance. It's a claim. That catch, I believe that was a dolly. बिल्कुल. That was a very, very simple catch, and if you drop those catches, you can have the other side of the coin. बिल्कुल काफी आसान सा कैच था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ वहां पे और वो भी मेहरान लेफ्टी का. अब मेहरान लेफ्टी क्या यहाँ से बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है. फिर वो उसको कन्वर्ट करता है, जब उसको चांस मिलता है फिर उसको कन्वर्ट करता है. क्या मेहरान लेफ्टी के दिमाग में वो चल रहा है? Absolutely, there is no doubt about that. He should try and convert that drop chance. This time just guides the ball beautifully. There is a deep third man. A single is going to cruise. And a very good start so far. Friends 11 Pulwama. Some good names playing for the team. Adil 50 getting back. He was not playing in that quarter final, I believe. Musab just making his place. Once again, he was trying to pull it, not finding the part of the blade properly, just hitting it onto the onside. 2 done. Pulwama winning the toss with a run rate of 10.5. They're 21 for none. You are stronger than you think.
TCI Max Cement. And you see Javed Jaddu having a word with Adil. He was hit for a 6 on the very first ball. He bowled, now he just got come back very stronger. And here is Mehran, lefty now getting ready. In goes Adil with a long run up. And eventually it could approach. It was hitting the middle stump and he got onto the back foot and plays it back along the track, not for the runs. और गेंद के पीछे आ रहे हैं मेहरा लेफ्टी. अगर आपके पास कितने भी पेस हो, लेकिन अगर आप गेंद के पीछे आते हैं तो वो जो दबाव है वो हट जाता है. और मेहरा लेफ्टी अच्छा खेल रहे हैं. अभी जो पेस थी, जिसका डर था, अभी तक अच्छा टैकल किया है फ्रेंड्स 11 के बल्लेबाजों ने. Mehran lefty is always known for playing those glorious cut shots, especially to that backward point. Ah, what a shot! It's picked to the length beautifully, and I believe just short of the mid-arm boundary. That is a good shot from Mehran lefty. You can't pitch the ball up, especially to the likes of lefty. It was delight. What a shot from Mehran. Just short of that boundary, or else it was carrying all the way. और इस शॉट से जिले पे नमक छिड़का गया है, क्योंकि जो कैच ड्रॉप हुआ है उसके बाद मेहरान ने वो तेवर दिखाए हैं. Absolutely, it's just rubbing the salt on the wounds of Pattan Pirates. They would be still thinking that how could they just drop that catch? It was a dolly. It could start once again to the over. This time, once again, bait finder. The ball is running away into the deep fine leg region. Will be surely cut off. And Mehran Pandit just getting 2 more runs. With every run he scores, it just gets into the confidence. And let's talk about the length of the bowler. Knowing the caliber, knowing the skills of Mehran lefty, especially if you bowl around that off stump channel on the wicket number 4. If you bowl him slightly over, it's definitely go square behind the stumps and you can go for the runs. और बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है. देखिए सिंगल्स भी ले रहे हैं और शानदार क्रिकेट हो रही है अभी. फ्रेंड्स पुलवामा ने वो जो पहले जो डर था, वो जो टैकल किया है अच्छी तरीके से, वो फास्ट बॉलिंग को अच्छी तरीके से टैकल किया है. अब जब सुपनर्स आएंगे, कैसे टैकल करेंगे उस सुपनर्स को? Well, that will be a good contest to having Javed Jaddu in the side and Mehran lefty not just going great. These are some good names of the valley. Mehran lefty has earned himself a great reputation. If you talk about district Pulwama, good ball and a good running between the wicket. That's good running. A very good single stolen. And eventually they just go through for a single. 8 of the over so far with 1 ball to go. और एक गेंद का अभी भी आना बाकी है. 29 बगैर किसी नुकसान के 2.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है. 8 रन अभी तक इस 5 गेंदों में खर्च किए हैं गेंदबाज ने. अब आखिरी गेंद कैसे फिनिश करेंगे? सामने रहेंगे मेहरान लेफ्टी, जिनका एक कैच आपने ड्रॉप किया था. आखिरी गेंद के साथ क्या शॉट खेला है मेहरान लेफ्टी ने. बॉडी लाइन से बाहर गेंद, 4 रन के लिए फाइन लेग बॉडी लाइन से बाहर. और मेहरान लेफ्टी, वो जो कैच इनका ड्रॉप हुआ था उसके बाद जो पारी खेल रहे हैं वो काफी कमाल की खेल रहे हैं. ये आप रिप्ले में देख सकते हैं. लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद और बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए डिस्पैच किया इस गेंद को. 33 बगैर किसी नुकसान के फ्रेंड्स पुलवामा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए. Wonderful shot on that last ball by Mehran lefty. He just quickly goes on to 17 of 8 and Javed Malik 12 of 10. And Sakleen, what a start. और स्टार्ट कमाल का मिला है 33 बगैर किसी नुकसान के. और आज की इस पिच का बिहेवियर कुछ अलग नजर आ रहा है. और तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया. ऑस्ट्रेलिया की जानिब खेला इस गेंद को. और अगर इस पिच की बात करें, अभी जो बिहेवियर मुझे लगता है कुछ डिफरेंट सा नजर आ रहा है. And the dugout of Prince 11 Pulwama at our screens looks quite relaxed. It is enjoying tea along with samosa. And we're just watering for the same. We're just feeling for the same. बिल्कुल, और एंजॉय कर रहे हैं समोसों को और वहाँ पे चाय भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिली है. और वो जो विकेट चाय का मजा होगा वो काफी शानदार होगा. अगर 1-2 विकेट्स गिरे होते तो मुझे लगता है चाय का इस तरीके से एंजॉय करते. And talking about that left and right hand combination always.
That is very, very challenging for the opponents. बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दर्द सर हमेशा बनता है कैप्टन के लिए भी फील्ड सेट करना और गेंदबाज को भी वो लाइन पकड़ना सही नहीं। ओ एक और शॉर्ट गेंद से टेस्ट करने की कोशिश हुई थी मेहरान लेफ्टी को। मेहरान लेफ्टी पुल अच्छा खेलते हैं। अब मेहरान लेफ्टी को अगर आप आउट करना चाह रहे हैं पहले आपको फुल स्टंप के आसपास गेंदबाजी नए गेंद से पहले इनके पैर नहीं चलते और हर किसी की खामियां रहती है बल्लेबाज की पहले, लेकिन जब निगाहें जमा लेता है बल्लेबाज फिर मुश्किल का होता है आउट करना। Absolutely, you just caught it pretty right. Next ball, pulls the ball beautifully. Oh, my goodness! I believe it went over the roof of the cab over there. He is lucky that the ball did not hit the body of the car. It was a massive shot, massive pull from Mera lefty. That is what we were telling and that is what we were discussing. Just fractional shot. And he just transferred all his weight on the back foot and just pulling it beautifully. और पुल काफी शानदार खेलते हैं मेरा लेफ्टी और क्या तेजी से गेंद ट्रैवल कर रही थी और 2 सेकंड में वहां पे पहुंची बाउंड्री लाइन से बाहर। That's in the replay. Next ball just onto the onside. And if we can have the replay of the shot, please. Just kept sailing. It kept go long as well. There we go. What a beautiful pull shot. Just see. And there we go. There was the car I was telling you. Almost hitting that. 40 for none. Once again. Just bisecting the mid-on and mid-wicket. The ball is running away. It will be surely cut off. Beautiful, beautiful effort. And lefty just getting another double. 9 off the over, I believe. 4 done. It's 42 for none. बगैर किसी नुकसान के 4 ओवर तापजीर हो चुके हैं। शुरुआत जो मिलनी थी फ्रेंड्स पुलवामा को वो अभी काफी शानदार शुरुआत मिली है। Great effort over there. Wow. फील्डिंग एफर्ट देखिए कमाल का। That is great. Unbelievable. And we see a bowling change. Zubair now. And that is what's impact, especially if you just go on after the bowler is right at the top. And eventually Captain Mohsin just had to go with the change of the bowling. और बिल्कुल अभी तक जो इंटेंट दिखाया है फ्रेंड्स पुलवामा ने वो काफी शानदार था। उस पे पेस को अच्छे से टैकल किया इसीलिए बॉलिंग चेंज की गई है यहाँ से। अब जुबैर कैसी गेंदबाजी करेंगे लेकिन इंटेंट अगर वही रहा तो मुझे लगता है दबाव है यहाँ से जावेद जड्डू को फिर बुलाना पड़ेगा। Well, his quota, his spell of 4 overs, Javed Jaddu, will be very crucial. But let's talk about the start. You know, just getting 42, just 4 overs bowled. I believe there is no problems at all if we talk about Friends 11 Pulwama. Just losing no wicket at all, going at over 10 runs per over, having power play. And I believe they are just having a very top edge on the very semi-final. बिल्कुल अभी अच्छी पोजीशन में खड़े हैं। जो स्टार्ट मिला है काफी कमाल का मिला है। जो ये अभी जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है काफी अच्छी हुई है। क्या एक गैम्बल खेल के जावेद जड्डू को एक ओवर कराएंगे यहाँ से? Well, I believe maybe he just brings him as another change from other side. Maybe we can have spinners on both the sides. Because the front line pacers have been taken for some runs. This time just deflecting the ball down to the deep scallop region. They go through for a single. And Mera lefty, who has got patience. He has got temperament. He has got technique. He has got time. And I believe he just tried to play a role and stay on the crease for more after overs and get something good for the results of Pulwama. Next one, pumps it away and has gone a mile. This is Javed Malik, typical slog. Just bowling it down and he just stretches forward and slogs it over mid-wicket for another 6 of the innings. और स्लॉग किया इस गेंद को और पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बड़ा छक्का इस बार जावेद मलिक के बल्ले से आता हुआ और पहुंचे हैं 20 पे 13 गेंदों का सामना किया है और इसी के साथ 50 रन भी मुकम्मल हुए। That is a great shot and I believe if you just get kind of a start, definitely 200 is loading. It's loading. बिल्कुल 200 रन आपको स्कोर बोर्ड पे दर्ज करने हैं फिर दबाव रहेगा। 200 का दबाव रहता है हमेशा और बड़ी गेम है, सेमीफाइनल मुकाबला है। Absolutely, just 8 of the first 3 balls
And just look at the two openers, Javed and Mehran. 50 partnership of just 27 balls. 20 of 13 from Javed and 26 of 14 from Mehran, lefty. And I believe worries started for Pattan Pirates, and captain now having a talk net who he is gonna bowl now. और जो भी अभी तक गेंदबाज आया है उस पे अच्छे शॉट्स खेले, वो इंटेंट नजर आया है. अब यहाँ से जावेद जुडुक पे भी दबाव रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टार्ट मिला वो अच्छा मिला है. अगर जावेद जुडुक को पहला दूसरा ओवर करवाया होता तो तब मे भी वो काम करते. And always, if you are playing in the big stage of the tournament, you can never afford to drop a catch. Catch dropped, and you see the runs flowing for Friends 11 Pulwama. वो भी मेहरान आप देख सकते हैं, फिर वो जो दबाव रहता है, एक और विकेट आप हासिल कर सकते थे वहां पे, लेकिन अभी पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड हुई नजर आ रही है. Once again, just making sure through the extra cover region. Wow, what a shot! One bounce, 4 runs. He is just making sure reaching to the pitch of the ball. And Javed Malik is such a powerful hitter. This time he just believed in timing, not trying to hit it more powerfully. And just couple of bounces down to the extra cover for 4. There you see. That's some kind of a slap on the ball. हाँ बिल्कुल, पावर जनरेट करते हैं अपने शॉट्स में और फायदा उठा रहे हैं अभी पावर प्ले का. दो ही खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, और जावेद और मेहरान, क्या इंटेंट नजर आ रहा है, कमाल का इंटेंट. That's great cricket. Good ball. And it just plays it down to the gully region, not for the runs. 12 after over, 5 done. Pulwama winning the toss with the run rate over 11. It's 54 for none. Beg your pardon, there is a ball left. I beg your pardon, there is one ball left. Too quick. It capped low as well. It's a dot one. 5 done. It's 54 for none. तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं. कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले, और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले. तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर. And here is Javed Jaddu. That is what I was telling you. Maybe we can have spin departments from both the sides. And there you go, Javed Jaddu. So spin introduced from both the sides. इनके 4 ओवर काफी क्रूशियल होने वाले. जावेद जुडू को कैसे टैकल करेंगे? अभी तक तो फास्ट बॉलिंग को अच्छा टैकल किया है, वो जो इंटेंट दिखाया वो शानदार रहा है. अब जावेद जुडू को कैसे टैकल करेंगे? It's a clan very less often you will find here in Kashmir cricket. Left arm spinner against the left-handed batsman. और बिल्कुल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं जावेद जडू, और सामने है मेहरान लेफ्टी, और मेहरान लेफ्टी के सामने कैसी गेंदबाजी होगी? Oh, beautifully cut, just waiting for the ball, cutting it late, just making sure he just bisects that point and gully. This is what I was telling you, just bowling him on the upside, and with that kind of a pace he's surely gonna go after you. Meran lefty, you beauty man. He is hitting the boundaries at his will, he's hitting the shots at his will, and they're just getting the runs quickly on the board, 58 of them. और आज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं मेहरान लेफ्टी, और ऐसा लग रहा है कि सेट होके आए हैं डग आउट से दोनों बल्लेबाज. और वो जो इंटेंट देखा, प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है जावेद जडू पे, पहले गेंद पे प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है. अब जावेद जडू कम बैक कर पाएंगे या नहीं? Next ball just plays it down, and it just plays it down to the short third man for a single. I believe it's a bye. There was no bat involved. I believe that's a signal from the umpire. No matter. Yes, it's a bye. The runs need to come. And Pattan Pirates, a very young side, some experienced players as well. Captain Moosin leading from the front, looking in good touch for the last 5 days. And semi-final on the cards. The team winning, just going through the finals. Emily Gymkhana yesterday already just cementing the place. And on Wednesday, 23rd, it's going to be the final starting from 10 a.m. Oh, just appealing for that stumping. And is out! He is out! Up goes the finger. Can he go for the review? And here he goes. I believe the foot was in the air.
That's why there was a close decision. And we have got a review for that stumping and TV umpire has got a roll. और यहाँ से रिव्यू खेले गए हैं जावेद मलिक और जोरदार अपील हुई थी स्टंपिंग की और अब तारिक साहब से मदद ली जाएगी और रिव्यू ले लिया है जावेद जो 24 पे खेल रहे हैं, मेहरान 30 पे खेल रहे हैं। 59 क्या है, विकेट हासिल करेंगे इस ओवर में। टीवी अंपायर से मदद ली गई है। क्लोज कॉल होगी, क्लोज कॉल है ये। अब यहां से मदद ली जाएगी टीवी अंपायर से। अभी भी समय लिया जा रहा है, क्या किसके फेवर में डिसीजन आएगा यहां से। जिन्होंने अच्छी गेंद की थी ये। It was a flighted ball. I believe that was not inside, just in there, and that too out of that crease. बिल्कुल अब यहाँ से और There you go. That is the best part you can have. And I believe the decision might go against Javed Malik. decision is still pending. And great keeping and great stumping, great work behind the stumps. और बिल्कुल स्टंपिंग काफी शानदार और रिएक्शन टाइम काफी कम था वहां पे। जो इनके ग्लव्स में गेंद आई, बेल्स को डिसलॉज करते हुए अब डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग। Let's wait what will be the decision from the TV umpire, third umpire, Mr. Tariq Saab. And that is gonna give you some good view. There we are. And that is very difficult, I believe. The moment bills were whipped off, the foot was just a bit on the crease, on that line popping. And let's see what will be the decision. And we can see it's just a very close call. बिल्कुल क्लोज कॉल। मे बी यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट भी हो सकता है। Maybe. And just let's see what will be the decision. It's out. He's out. He's stumped and a beautiful ball, a flighted ball by Javed Jaddu, and that is what we were telling. Javed Jaddu is going to have a very big impact on the game. और इस पार्टनरशिप को ब्रेक किया है जावेद जड्डू ने, लेकिन एक शानदार पारी खेल के गए। वो स्टार्ट दिया है अपनी टीम को जावेद मलिक ने और जा रहे हैं धीरे धीरे बोझल कदमों से जा रहे हैं पेविलियन की। और अब नए खिलाड़ी क्रीज पे आ चुके हैं। 59 एक विकेट के नुकसान पे फ्रेंड सलेमान पुलवामा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए और अच्छी पारी खेली है जावेद मलिक ने। Absolutely, that's a wonderful note. Just 24 of 17. The more important thing that a good start has been provided. बिल्कुल। Just 59 on the board, and if you just go with this kind of a start, especially in the power play, I believe you have got a good score. Just go on the board. बिल्कुल आप रिप्ले में देख सकते हैं। ओ शानदार वहां पे स्टंपिंग रही है विकेट कीपर की। और अब यहाँ से क्या स्ट्रेटजी रहेगी परवेज नजार की। पिछले मैच में एक अच्छी पारी खेली थी परवेज नजार ने। Yes, Parvez Najjar, he was brought in the side in that quarter final, played around 40 runs, and today once again he finds himself at a good stage. Some good runs on the board, no pressure for him, and he just plays it defensively down to the Squalic region and gets off the mark. अब यहाँ से मेहरान को एक लंबी पारी खेलनी होगी क्योंकि आप पता है अपने पार्टनर को खोया है। अब मेहरान क्या स्ट्रेटजी दिखाएंगे यहाँ से जावेद जड्डू के सामने। Well, I believe he was having full time, full freedom to Javed Malik. You just go after every ball. Now just knowing that the man is gone and Mehran lefty will be a very, very sensible player now. Knows he just has a lot of responsibilities on. And he will just play in the rotation and let other players who come on the crease and just use the long handle. बिल्कुल मेरा लेफ्टी की वही कोशिश होनी चाहिए थी। इस पे अभी खेल रहे 17 गेंदों का सामना किया परवेज नजर अभी भी आए हैं। अब एक पार्टनरशिप की जरूरत है, लेकिन वो जो इंटेंट है अगर वही इंटेंट दिखाएंगे और उसी मोमेंटम को कैरी करेंगे तो फिर 200 तक के स्कोर बना सकते हैं। In T20 you never know what will be the quick decision and what will be the scenario. Next ball just plays on the onside. Javed Jaddu just finishes over. He just gone for 6 and he has got a wicket as well. 6 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। 61 एक विकेट के नुकसान पे फ्रेंड सलेमान पुलवामा।
Royal Concept. Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले। Welcome back after the power play. This one just locks it beautifully. And as the power play gets done, we just see the fielders being spread off. Mera lefty has to play a very key role. He knows that special thing about the man is, you know, he's a left-handed batsman. And left-handed batsman is always a challenge for the bowlers out here in the Kashmir Valley. Saglan, you agree with the same? बिल्कुल, और लेफ्ट-हैंडेड बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना थोड़ा बहुत परे। ओह, लीडिंग एज और जाना पड़ेगा पेविलियन की ओर। परवेज नजार एक रन बना के जा रहे हैं पेविलियन की ओर। सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा मैं यहाँ पे। This is what I was telling you in T20 cricket. You never know if you are in a good position. It doesn't take much of the time to be in the worst. Just leading edge, and Munir Bhatt, who plays for Sultan Warriors Baramulla as well. And Parvez Najjar very disappointed today, not having runs under the belt. He departs for one. And Prince 11 Pulwama now in a bit of a bother. Two down with just 62 on the board. और फिर से हमने देखा कि स्पिनर्स का यहाँ से अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस पिच पे और मदद भी मिल रही है स्पिनर्स को. Let's give credit to the captain Mohsin. Knowing that Zubair was hit for some runs, he quickly replaces him with Munir Bhatt, Munir Khan, and he just comes up with a wicket. बिल्कुल, अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी कैप्टन आए हैं. अब कैप्टन पिछले मैच में अनलकी आउट हुए थे. अब यहाँ से कोशिश इनकी होनी चाहिए कि अच्छी पारी खेले. Absolutely. Even though the start has been provided, the run rate looks good as well. Still under. Oh, that is very bad. And they were just trying to work it on the onside, and the batsman never allows to get out in that fashion. In the replay, you can see he was trying to work it on the onside, softly, soft leading edge, and soft dismissal as well. There we go. Captain Shirazwani just walks out to the centre. Has already got one player of the match in this tournament. He has caught 150, I believe. And the last quarter finally played, he got out in a very unfortunate manner, just hitting the stumps, even though he just hit the ball for 6, but he was out. Oh, what's going on? He just trying to slash it, and a bat just came out of his hands. What's going on, my boy? और पिछले मैच में आप अनलकी आउट हुए थे. इस मैच में Saglan, if you remember, he just had the same incident in the last match as well. Oh, बिल्कुल. I believe. मुझे लगता है अभी भी इनके दिमाग में वो है. I believe Shirazwani just, he is having those episodes now in his career. He has never gone through the same in his 20-year cricket career. बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? और इनके हाथ से वो बल्ला छूटा था वहाँ पे. शिराजवानी कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे खड़े रहे, क्योंकि पिछले मैच में ये जो डीप में ये खड़े होते हैं जब वो एक पुल मारने चले जाते हैं. Just in the replay, if we can. There we go. We have got a replay. Just watch this. Watch this beautifully. Oh, never often you see in this game of cricket, but today Shirazwani, one more incident from him. Just leaning forward, proper respect to the ball, pushing it all along, straight to the bowler, not for the runs. And eventually great game going on. We're having fun, we're having good shots, we're having good bowls, good catches, and that is good cricket going on. Just deflecting the ball down to the backward square leg region. And easy pickings it will be for Vani, just cutting off the mark with the double. And his stay on the crease, experienced. He has been playing cricket for around 2 decades. He has been leading the side. He has been, just exposed to all the districts of the valley, just playing cricket since the age. And if he just stays on the crease for around 5-6 overs, I believe he will be a kind of a bonus to the team. Next ball, just thumps it straight to the cover. Munir Bhatt, a very successful over comes to an end. Just 3 from it and a wicket, 7 done. It's 64 for 2.
Come on, you can do this. Come on. Come on. I say come on. Come on, you can do this. Come on, you can do this. Come on. Come on. Come on. Come on. कर छूना है आसमान को मजबूत अपनी सोच रख बुनियाद जब पुख्ता बने बर्बाद First ball from Danish Kallu, another spinner introduced. He is a strong contender for man of the tournament, 2 hat-tricks, 2 50s. And 2, I believe, rather 3 man of the matches so far. Next ball driven firmly. That is in the gaps and that is for 4. This is Mera lefty. If you give him this kind of a length, especially outside the off stump, and he gets enough of time to go deep in the crease and he just smashes it, smacks it, he just slaps it and through the extra cover region for 4 runs. और क्या शॉट था, एक कमाल का शॉट, आप रिप्ले में देख सकते हैं. ये देखिए थोड़ी सी विड्थ में थी और बैकफुट पे आए, कमाल का शॉट खेला और बड़ी गैप थी वहां पे, उसी का फायदा उठा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन्स के लिए. And he might be compared to some good hitters of the ball, especially on that offside. He's a good driver of the ball, good cutter of the ball, good puller of the ball. That's why I just set this Mera lefty among those players who have got all 3 T's. That is time, temperament and technique. You know, if you watch him closely, Mera lefty as usual, you will find him having enough time. You will have him having enough temperament and you will have him having great technique. And that is what makes a cricketer a very, very good player of the game of cricket. और बिल्कुल टेक्निकली काफ़ी साउंड बैटर है. अगर हम यहाँ से बात करें मेहरा लेफ्टी की या शबीर लेफ्टी की, वो टेक्निकली मुझे काफ़ी साउंड लग रहा है. शबीर लेफ्टी हो या मेहरा लेफ्टी, मुझे अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मुझे लगता है सबसे टेक्निक इनके पास है. I will take these 2 out from Pulwama who just have good technique. One more good thing about these 2 batsmen I would love to just mention over here is their patience. They just play according to the situations of the game. Mera lefty knows that we have already got a good start, even though, and he knows that we have got 2 wickets back to the pavilion as well. But I must tell you that he is just playing with his natural talent, with his natural time, and that's why he's getting successful in all the games he plays for his team Pulwama. बिल्कुल, और यहाँ से आप देख सकते हैं सिंगल्स को डबल्स में रोटेट करते हैं और जो रनिंग बिटवीन द विकेट वो काफ़ी अच्छी रहती है मेहरा लेफ्टी की. और अभी भी आप देख सकते हैं इनकी फिटनेस की अगर हम अभी बात करें, अभी तक की जो इनिंग्स रही है, आप देख सकते हैं कोई भी शिकन, कोई भी थकन हमें नजर नहीं आ रही, बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं और जो दौड़ लगा रहे हैं वो काफी कमाल की है. तो फिटनेस कितना मैटर करते हैं क्रिकेट में. Indeed, you know, fitness is such thing, it's a very important factor if we talk about the cricketer. You know, physical fitness you have to be always believe in. You just have to work on the same. The training session becomes quite mandatory for the player, just keep himself fit. And I would love to request also the players of the valley, if you just want to see yourself at a good level, you just have to believe. That has gone all the way. That has been thumped over extra cover region for a 6 from Shirazwani. Just plighting the ball. And Munir Bhatt has been given the answer. What a shot that is from the captain. Once again, straight as an arrow. That's running away. It goes down to the fence for 4 runs. 6 followed by a boundary. And Shirazwani, you can't bowl him to this kind of a length. और वो इंटेंट नजर आ रहा है, शिराजवानी शानदार टच में नजर आ रहे हैं. You know, Saklan flighting the ball, especially you just flight it up. You pitch it up and you're gonna up and over. That's what Shirazwani believes in. और बिल्कुल वही शिराजवानी की अगर आप बात करें, जो इनके पाले में गेंदबाजी हो रही है, आप देखिए डिफेंस भी किया है, शानदार क्रिकेट हो रही है शिराजवानी की. पता है अभी ये मुकाबला काफी क्रूशल है, यहाँ से अगर जीत गए तो फाइनल्स में जगह बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी शिराजवानी खेल रहे हैं. Well, let's talk about the maturity. You know,
Shirazwani is gone! He's gone on the mid-on. Javed Jaddu not going to drop those catches. I was telling you, this is what I was going to mention, maturity. He was having a 6. He was having a boundary. And there was no need to go for another slog. This time could not cut elevation. Beautifully caught by Javed Jaddu. He is one of the greatest athletes, greatest players, and greatest fielder as well. In the replay, you can just watch it. And there is a stunned silence in the dugout of Pulwama. There we go. Not hitting it. Oh! ये देखिए आप जावेद जड्डू का कैच और जो सेलिब्रेशन जावेद जड्डू ने दिखाई. Let's give credit to the jump of Javed Jaddu. That's a jump, and he jumped to the perfection, and he jumps to the catch as well. शानदार कैच पकड़ा जावेद जड्डू ने और 83 विकेट के नुकसान पे. ओह, ये जंप देखिए क्या कमाल की है. Sakleen, I was going to discuss maturity. See what maturity actually is. Mera lefty knows we have got a good start. We just believe in ones and twos. We will definitely get some loose balls and we will just counter that. But talk about Shirazwani. He's such an experienced cricketer. He has got a 6. He got a boundary of the very over. He got a start. But eventually he just kept going for the same. Mature cricketer, he just knows I got a run rate that I need to go with. He will just change. He will just switch his aggression. And he will just play in the rotation. That is not looked as far as one is concerned. बिल्कुल आप देख सकते हैं वो एलिवेशन मिला नहीं, लेकिन जरूरत ही नहीं, शॉट की जरूरत ही नहीं. आप चाहिए आप सिंगल्स को डबल पे रोटेट कर आपको करना चाहिए था और जो खराब गेंद मिलती उसको आप सही से देते, जैसे अभी मेहरान लेफ्टी कर रहे हैं. मेहरान लेफ्टी बिल्कुल आज अलग ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. और इस बार बल्ले का मुंह खुला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे. अच्छी फील्डिंग और दूसरा रन भी मुकम्मल किया. अब उसी मोमेंटम को खैरी आगे करना होगा अगर 200 तक आपको पहुंचना है और मेहरा लेफ्टी को एक बड़ी पारी आज खेलनी होगी. 82 3 विकेट के नुकसान पे 8.5 ओवर की गेंदबाजी और मुनीर ने अच्छी गेंदबाजी की है. 2 विकेट्स अभी तक हासिल कर चुके हैं. आखिरी गेंद इस बार खेला शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, कोई भी रन नहीं मिला. 9 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं. फ्रेंड्स इलेवन पुलवामा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 82 3 विकेट के नुकसान पे. अपनी दूर रख Stronger than you think. Max Cement. Danish Kallu into lefty. Just cuts it and finds the backward point fielder at the edge of the circle, not for the runs. Mera lefty. He will have to play a role. Just make sure. He just stays on the crease. Beautifully played this time. Such a lovely cutter of the ball. I am just a big fan of his cut strokes. Mera lefty. Personally, I just love him the way he just cuts the ball, drives the ball. And now Abid Mir, who played a very wonderful knock in that quarter final. He was the man of the match for Prince 11 Pulwama. He's batting on 2. And he should also try to believe in and just having some runs under the belt. And Javed Jaddu now stands in the gully. Some changes. Mid-wicket fielder now taken off and he has been brought on the backward point. There is a deep point, a short cover and a long off. Next one just works it on to the upside, knocks it to the upside, down to the deep point for a single. And this is good cricket. 2 runs of the first 3 balls. And bonus thing I would love to mention over here for Friends 11 Pulwama, that Mera lefty is still on the crease, having, just plays with the left hand. He will be creating some problems for the likes of the bowlers of Pattan Pirates. ये आप देखिए बाइसेक्ट करते हुए 2 खिलाड़ियों के बीच में से एक शॉट खेला, क्या फील्डर रोक पाएंगे? जी नहीं. और बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए ये कमाल का शॉट था. मुझे लगता है शॉट ऑफ द डे.
what you will say about the shot. And once again, timing, temperament and technique comes into play for मेरा लेफ्टी. आज मुझे अलग ही खिलाड़ी नजर आए हैं मेरा लेफ्टी. आज ये जो सूझबूझ के साथ ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैंने अभी तक इनको ऐसे खेलते हुए कभी नहीं देखा है. सूझबूझ के साथ सिंगल्स को डबल्स में रोटेट कर रहे हैं. जब खराब गेंद मिलेगी उसको सही नशे दे रहे हैं. आज तो अलग ही खिलाड़ी नजर आ रहा है मेरा लेफ्टी. Well, he has to come quite different and unique today. He knows the importance of this very semi-final. And winning going to the finals, losing, and they will just have something to worry about. But he's playing a great knock. 42 of 27. In goes Kolu. Good ball, just quicker. They were just coming down, just trying to cut it late. This time, that's why one more fielder has been added to that gully region. Knowing that this is a strong zone. This time, that is good shot. That is good deflection onto the square leg region. And easy pickings. Easy pickings for the man. 7 of the over. The run rate still almost to 9. A very healthy run rate. 10 done, halfway done. It's 89 for 3. I believe it's going to be snowdrop, drinks break. और फ्रेंड्स सलाम पुलवामा जावेद मलिक 24 पे सम आउट हुए थे. महरान पंडित अभी भी खेल रहे 43 पे. परवेज नजार 1, शिराजवानी 13 और आबिद मीर अभी भी खेल रहे. नॉट आउट 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. 10 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं. 89 फॉर द लॉस ऑफ 3 और अब यहां से स्नो ड्रॉप ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा. ये पटन पैरेट्स की गेंदबाजी है और आदिल 2 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं. उमर केपी 2 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं. जुबैर अहमद 1 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं. जावेद जडू 1 ओवर 6 रन, 1 विकेट. मुनीर भट्ट 2 ओवर 15 रन, 2 विकेट. दानिश कुलू 2 ओवर 13 रन और कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए. क्रिकेट मैच च माई लो लो दोस्त दोस्त सरी आई लो लो
Drinks break. Sinner drops. Rather, Sinner drop. Drinks break is gone. And I believe we have got a replay of the... that was a great work done by the keeper. And we just got a stumping. This fun. That was a good catch at the short cover. And this was funny. And if it is that, the bat that just comes out of the blade, the hand. Yes! That was very funny. Very entertaining. And lucky that the fielder there was... (47 of 30). And I just loved the moment Abid Mir just patted his head just after hitting that boundary. That is some kind of encouragement. And that is a good support. This time, Munir Butt, who has got 2 wickets, who plays for Sultan Warriors Baramulla. The run rate just exactly 9. And works it on the onside this time. 48 now, Mera left. Saklan getting his half century. I believe he should still not, try to get that kind of impatience. He should believe in converting that half century into a big score. Try to play out all the 20 overs. Stay on the crease at one side. And maybe on the other side, the batters will come using the long handle, blaming and acceleration. And I believe that can help them to put up a good score on the board. बिल्कुल कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बाकी बल्लेबाज है अगर वो बड़े शॉट्स के लिए जाए, लेकिन मेहरा लेफ्टी वहाँ पे खड़े रहे. जितना ये डीप ले जाएंगे अपनी पारी को वो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स सलाम पुलवामा के लिए. लेकिन आज मुझे लगता है मेहरा लेफ्टी का जो आज प्लेयर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आ रहे हैं. और सबसे बेस्ट पारी मुझे आज, मैंने मेहरा लेफ्टी को बहुत खेलते हुए देखा, लेकिन जो आज उन्होंने खेला है वो काफ़ी कमाल का है. He is indeed a very Kamal batsman. A very talented lad. Ball just deep in the crease he goes and pushes. Not in the gaps. There he goes around the stumps once again. That is a proper respect. That is a proper respect. 6 of the over. 11 done. It's 95 for 3. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस. सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बेन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं. वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते. And here is Javed Jaddu into his very second over. Appealing for that decision, appealing for the LBW. But that was above. It was height in the factor, height in the issue. And Javed Jaddu just having 3 overs left. He has already got a wicket in his very first one. His spell will be very crucial. This time, it's up in there. Fielder underneath. Will he take the catch? And he makes no mistake. Up it just departs. I was telling you, Javed Jaddu is going to tempt the batsman to go against him. And eventually, Abid just falls to prey. He becomes a victim of that flight. He could not get the distance, caught the elevation. And Saklan, number 4, departs 95 for 4 now. बिल्कुल, और जावेद जड्डू फ्लाइट से बीट कराने की कोशिश करेंगे, वही किया. और एक बुरी खबर यह है कि इनके 2 ओवर्स इसके बाद और बचे हैं. Yes, that's what I was telling. He's just into second over.
And with every wicket he gets, he will be very, very dangerous to handle. बिल्कुल लीथल बनेंगे फिर. और 2 विकेट्स तो ले चुके हैं, 6 रन दिए हैं और अभी दूसरा ओवर ही कर रहे हैं. 8 गेंदें ही किए हैं और 2 विकेट्स दिए. क्या गेंदबाज है जावेद जड्डू, और इम्पैक्टफुल प्लेयर है और आज इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में. Abid Mir, man of the match in the quarter final, and just 2 of the 4 today. There we go in the replay, just slugging it over. And he got elevation, unfortunately, no distance at all. And eventually, a beautiful catch. And out walks to the centre, Mr. Yunus Butt. He's also a good cricketer, a good hitter off the ball. And one thing you should make sure, just they should play till 15 over without losing a wicket. और कैप्टन की यहाँ से तारीफें करनी चाहिए. जावेद जड्डू के ओवर्स भी जल्दी फिनिश करा सकते थे वहाँ पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके ओवर्स बचा के रखे. पता था कि जब जो बल्लेबाज आएंगे आप बाद में उन पे प्रेशर बनाएंगे, और वही किया है. जावेद जड्डू को सेव करके रखा है और एक अच्छा मुंह था कैप्टन का. This one was a very quick ball. And he just manages to play it down to the cover, I believe, Mohsin out there and not for the runs. Yes, I would definitely give credit to the captaincy. He could have gone with Javed Jaddu constantly, but knowing that he is a very good bowler. Oh, what a ball that is, I believe, was there some bat involved. And eventually the wicketkeeper is not grabbing it properly. Javed Jaddu now he is becoming very difficult to just play. 1.4 over, just 6 runs and 2 wickets. And this time he just deflects the ball down to the mid-wicket and gets off the mark. Yunus 96 for 4. And Mehran, once again they rely on him mostly now. He's just short of 50 by 2. And he will just try to play the full cut of the 20 overs. That's a need for him and his team as well. बिल्कुल पुलवामा को भी जरूरत है मेहरान लेफ्टी की. अगर खड़े रहे अंत तक तो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य आप स्कोरबोर्ड पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से मेहरान लेफ्टी कुछ रैश शॉट करके अपनी विकेट देंगे तो फिर परेशानी में आएगी फ्रेंड्स पुलवामा की टीम. और बैकफुट पे आए, खेला वहां पर डीप पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहा है और 1 रन मुकम्मल किया. स्ट्राइक अपने पास रखेंगे. 97 4 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स पुलवामा 12 ओवर की इख्तिताम पजीर पर. क्या गेंद थी, क्या कमाल की गेंद थी, कुछ भी समझ नहीं, पैर नहीं चले बल्लेबाज के, और शानदार गेंदबाजी जावेद जड्डू कर रहे हैं. Javed Jaddu, as usual, as always, very difficult to pick him. The variations, the weapons he has, just bowling those straight ones, bowling those kinds of spin balls as well. At times he just bowls quicker ones. And that becomes very difficult for the batters to pick him. That's why he's rated as one of the topmost left-arm spinners of the valley. बिल्कुल, इसीलिए वो जाने जाते हैं. मेहरान लेफ्टी ने कट किया गेंद को, रन की मांग और रन लेंगे. इसी के साथ यहाँ पे निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है. मेहरान लेफ्टी ने आज दिल जीत ले. जो पारी रही है वो काफी कमाल की, और यहाँ से डगआउट से आप देख सकते हैं तारीफें और स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते हुए मेहरान लेफ्टी के लिए. लेकिन मेहरान लेफ्टी ने बैट नहीं हिलाया. पता है अभी भी मुझे अंत तक ले जाना है. Absolutely, he does know the value. He was 50 of 36, 7 fours and 1 6. And I believe until and unless Pulwama find this man on the crease, they will be finding themselves in a very safe zone. And to some extent, I believe the run between the wicket is now in a bit of a problem. You know, Yunus is not a good runner of the ball, plus he's not having a good coordination with Mehran lefty. And they will have to be very, very active between the stumps, because it may be at times a chance of a run out. X-Paul just plays it on the onside down to that wideish mid-wicket. And easy picking, stealing in singles at the moment. अब यूनुस का रियल टेम्परमेंट यहाँ पे चेक किया जाएगा. यूनुस क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे या सिंगल्स को डबल्स में रोटेट करेंगे? अब यूनुस अभी भी आए खेलने के लिए, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और यहाँ से आपका रियल टेस्ट आज होगा. This time just bisecting the gap beautifully. And just using his boot and stopping the ball, is singly cruising, another single. Yunus Butt, who is a very tall cricketer.
He's always a good hitter of the ball. And at the moment, his job should be try and give good company to the likes of Meron lefty. Once again, just bowled from the back of his hands, bowled a type of a arm ball. And eventually, Meron lefty finds the cover fielder. Munir Butt having the last ball of his quota. A very successful one, 2 for 25. और स्पिनर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं इस पिच पे और इस पिच को अच्छे से रीड करेंगे फ्रेंड्स सलाम पुलवामा की जो टीम है जब चेजिंग आएगी यहाँ से पीसीसी पटन पैरेट्स की अगर हम बात करें फिर क्या स्पिनर्स का जाल बिछाएंगे? Well, I believe, spinners, if we look for the last 5 matches, spinners have surely played a dominant role. The more spinners you have on your side, the more better you come with the results. And Pattan Pirates having the spin department very strong, likes of Javed Jaddu, Munir and Danish Kallu also bowling, also Zubair chipping in. And that's why you see that we do not have many runs being scored. And if we talk about the pacers, they were taken for some runs. Bilkul. And after that, Javed Jaddu, his 2 overs, just watch it, only 8 runs with an economy of 4. And having 2 overs still left for that man. These are very crucial overs. भी 8 रन ही दिए मुझे लगता है इस ओवर में अगर 6 रन ही आएंगे 5 रन ही आएंगे वो फ्रेंड्स पुलवामा लेना चाहेंगे लेकिन विकेट्स ना दे अभी जावेद जड्डू को इस ओवर में. Well, let's see how the approach will be. And leaning forward, plays it on the onside. Javed Jaddu just walking bang. And easy pickings. 2 more runs. That's a good running between the stumps. And let's talk about Javed Jaddu. He comes on to bowl. He has one deep square leg, deep mid wicket, and he has got that long on as well. He knows that Yunus may go for those big slogs. That's why you will have more of the flight balls on the trot now. बिल्कुल लालच जरूर देंगे. जावेद जड्डू शातिर गेंदबाज है. लालच जरूर देंगे यूनुस को. क्या बड़े शॉट के लिए जाएगी? डायमेंशंस काफी बड़े हैं. अब यूनुस क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे? This is what I was telling you. He went for the slog and missed it, and fortunately his foot was inside. Javed Jaddu is such a clever bowler, such an intelligent cricketer. He just understands the mind, he just reads the mind of the batsman. This time just chips in air. Oh, short of mid-off. He was trying to work it on the onside and he just got a leading edge. Lucky that the ball just got carrying down to the mid-off. कुछ भी समझ नहीं आ रही है यूनुस को क्या कौन सी स्ट्रेटजी मुझे दिखानी है. ये आप देखिए पैर नहीं चल रहे हैं. जावेद जड्डू के सामने आपको ज्यादा कुछ करना है नहीं. अगर आप सिंगल देंगे अगर 4-5 रन ही आएंगे वो अच्छा रहेगा. और इस बार 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया. ये करना है लेकिन जावेद जड्डू की जो गेंदबाजी रही है जो सुपर रहा है कहीं ना कहीं जो रन का फ्लो है काफी कम हुआ है. And Javed Jaddu has played under 19 for JKCA and he has got such lot experience. And that's why he's just bringing all his experience out there in this very semi-final and creating more problems and more challenges for the batsmen of Prince 11 Pulwama. और वही होता है जो यूनुस अभी खेल है. 9 गेंदें खेले 6 रन. इसे दबाव आ सकता है मेहरान एफटी पे और वो रेड शॉट खेल के अपनी विकेट दे सकते हैं. तो ऐसे आपको करना है नहीं. बैकफुट पे आए खेला डी पॉइंट की तरफ पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं. क्या रोक पाएंगे? जी हाँ अच्छी फील्डिंग और तेजी के साथ 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया. 105-4 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद है जावेद जड्डू के ओवर की. फिर भी उनका 1 ओवर बचा है तो क्या इसके बाद ही उनको 1 ओवर कराएंगे? Well, I believe captain might think to just have him on that over number 19 or 20 because those 2 overs are always crucial, especially keeping in mind the format of T20. Wraps him on the pad, up goes the finger. This is what I was telling you. He was just trying to work it on the onside. It was a straighter ball from Javed Jaddu. Misses and he was trapped. And Javed Saab is having no problems to just raise his finger up. Jaddu comes up with wicket number 3. 14 done. Pulwama in a deep trouble now. 5 down. It's 105. बिल्कुल नथिंग शॉट था. कोई जरूरत नहीं थी यूनुस को. अगर डॉट भी खेलते अगर 4 रन से आते वो काफी रहता लेकिन यूनुस ने यहाँ से बिल्कुल 3 विकेट्स के सामने पाए गए. अब आदिल 50 खेलने के लिए आए हैं. 1 ओवर अभी भी बचता है जावेद जड्डू को. उसको कैसे टैकल करेंगे? अब बचे हैं यहाँ से 6 ओवर. ये आप रिप्ले में देख सकते हैं. जावेद जड्डू ये देखिए
प्लम 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 बिल्कुल तीनों विकेट्स के सामने पाए गए, कोई फीट मूवमेंट नजर नहीं आया और पिक नहीं कर पाए। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज यहाँ पे भी काम कर, क्योंकि ज्यादा फेस आप करते हैं नहीं, और वो आप देख सकते हैं ये बल्लेबाज ने वो करके दिखाया, वो फुटवर्क नजर नहीं आया और जावेद जुडू ने फायदा उठाया। अब जावेद जुडू के बचे 1 ओवर 3 विकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, 12 रन कंसीडर कर चुके हैं, अब बचे हैं 6 ओवर्स। क्या 6 ओवर्स में 60-70 के आसपास रन बनाएंगे? अब आए हैं आदिल 50, ये सुपनर्स को अच्छा खेलते हैं। And Saklan, this is what happens with the team. And just talking about the start, a very impressive start of around 59 runs. And now see the situation of Pulwama. They're 5 down with just 105. So since the departure of the first wicket, they have been already 45 runs and they have lost 4 wickets. That is what I tell you. T20 format is just type of a format where you never get enough of time to just come back stronger. That's why you have to play according to the situation. You have to play your natural game. You have to play as per the situation is demanding. And I believe Mera Lefty just pitting that kind of a situation. This time, he thumps it over. That has gone a massive. That has gone out of the ground. And that has gone for 6 runs. और गेंद की लाइन को पहले पिक किया और मेरा लेफ्टी रुकने वाले हैं नहीं, और पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया मेरा ने। इनके पाले में गेंद थी और स्लो काफी शानदार खेलते हैं और बाउंड्री लाइन से बाहर इस गेंद को भेजा मेरा लेफ्टी ने। Zubair now recalled. He was taken for 12. He was taken off quickly. He's brought in again and has been hit for a 6. अब कमबैक करेंगे या नहीं? मेरा लेफ्टी होंगे सामने। That's going to be a wide, way outside the off stump. And this is now going to give bonus. And knowing the importance of the wicket of Mera Lefty, I believe he is the man, the wall, the Gibraltar, the rock, and the dependable they just believe and rely on mostly if we talk about Friends 11 Pulwama. बिल्कुल मेहरान को खेलना होगा, 20 ओवर तक वहां पे खड़ा रहना होगा, तभी एक अच्छा स्कोर दर्ज कर सकती है फ्रेंड्स 11 पुलवामा की टीम। अब यहाँ से मेरा लेफ्टी के दिमाग में क्या चल रहा है? इस बार कट के आया गेंद को गली की तरफ, रन की मांग नहीं मिलेगा और ढोड़ गेंदे और जुबैर अच्छा कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं इस ओवर में। And Zubair just second over in progress. Oh, that could have been run out. And eventually Adil 50 was well in. Oh, just tucks the ball. Ah, there is a misfield. And that's gonna earn a single. Misfield, wides, extras, no balls. And today I believe there has been a lot of control on the extras. बिल्कुल एक्स्ट्रास नहीं ज्यादा आज थी नहीं, गेंदबाजी अच्छी रही है। 113 5 विकेट के नुकसान पे अब आदिल 50 आए खेलने के लिए। अब आदिल 50 क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे? सुपनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं लेकिन यहाँ से सिचुएशन डिफरेंट है। ओ 1 रन की मांग और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 114 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी आखिरी गेंद का आना बाकी है। अब मेरा लेफ्टी इसके बाद 5 ओवर्स बचते हैं तो 5 ओवर्स में कोशिश होनी चाहिए 50-60 रन बनाने की। Well, eventually, if we just talk about the last 5 overs, having 30 balls in hand, having 5 wickets left, they can get 50 runs, and still they will manage to go around 165, 170, and that will be a very handy score. Just ball! That has been pulled away! Wow, what a show! And the mid-wicket fielder just jumped and eventually could not jump to perfection. And the ball had got in a pace and speed and power behind it. It just crossed over and it goes for a 6. कोशिश काफी शानदार हुई थी वहां पे, लेकिन पावर जनरेट करते अपने शॉट में तेजी से गेंद ट्रैवल कर रही थी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। Mera Lefty just hitting second 6 of the over once again. Zubair, he has been hit for 15 runs of this over. That turns out to be a very great over as far as Pulwama concerned. 120 for 5 and the run rate exactly on 8 now. And let's see what will be the approach of Adil 50 now. और जावेद जुडू को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया। आखिरी ओवर क्या अगर यहाँ से आदिल 50 की विकेट लेंगे, मुझे लगता है फिर बैकफुट पे पूरी तरीके से बैकफुट पे आएगी फिर ये टीम फ्रेंड्स 11 पुलवामा की। There has to be used to the mind of Pulwama 11 and Adil 50 has to make sure just try and convert some runs in the over without giving a wicket to Javed Jaddu.
and then still they will have 4 overs. You know, if we talk about 24 balls, you can get 40 runs around, and you will be going over 160. मुझे लगता है जावेद जडेजा को टैकल करने के लिए आपको अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने जावेद जडेजा उतना ज्यादा कारामद साबित नहीं होते हैं. अगर यहाँ से अपने पार्टनर को स्ट्राइक पे लाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा फ्रेंड्स पुलवामा के लिए. That's what I was believing in. Rotation is on, and just bring your partner. That is a good shot. The sound was great, and Adil 50, he gets a single. And the 5 ball Javed Jaddu has now has already got 3. Let's see what will be the approach of Mera lefty for the remaining 5 balls of Javed is over. Javed Jaddu, he's a magician with the ball. He's absolutely a magician. He is called Magician of Kashmir. They have got 3 fielders behind the square on the offside. That is a good shot. That is what he is good at. He just got to that ball, he just got to that line, and he just plays it on the onside for a single. I just love the way Mera lefty just playing today. और अभी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल थके हुए नजर नहीं आए, और आप जैसे काफी समय से अभी 15-2 ओवर की गेंदबाजी अभी भी खड़े हैं, लेकिन थके हुए नजर नहीं आ रहे हैं. Absolutely, that shows how fit you are. He has been playing for around 46 balls. That is good. A good approach to play against the likes of Javed Jaddu. See the reaction of Javed Jaddu, just having his hands on his head, knowing that it was a flight ball. And Adil 50 loves to have the flight ball, especially he will just go bang after the ball. And that is a great mature cricket from Adil 50. इस ओवर में आपको विकेट देनी है नहीं जावेद जडेजा को. अगर यहाँ से विकेट देंगे तो फिर जो पूरी तरीके से मुझे लगता है बैक फुट पे आ सकती है फ्रेंड्स पुलवामा की, क्योंकि अगर ये 2 खड़े रहे अंत के 4 ओवर्स में ये 40-50 के आसपास बना सकते हैं. Adil 50 can be a very dangerous customer, and is also a good hitter of the ball. Yes, time again. That is a good respect. Knowing that Javed Jaddu is a very, very difficult bowler to pick, and this is a good strategy, just dotting the balls, not going for the runs, and just trying to make the over finish. This time once again, and is being appreciated for the same. Even though it's a T20 cricket, you can't afford to have 3 dot balls on the trot, but you can't afford to lose the wicket as well. बिल्कुल टैकल है. अब एक गेंद है बस, यहाँ से विकेट ना दे जावेद जडेजा को. 3.5 ओवर की गेंदबाजी, 14 रन, 3 विकेट्स ले चुके हैं, और आज इनको जो And Javed Jaddu is asking Adil 50, what? Why are you not going after me? Let's see what will be this response. Here goes Jaddu. Turns it down to the final leg region. Let's see what will be the reaction. There you go. He's having some words. And Javed Jaddu just finishes his corner, getting a boundary on the last. 16 done. It's 1-2-6 for 5. Scorecard of Friends 11 Pulwama. Run Pandit 66 not out of 46. Javed Malik, good runs to him, 24. Shirazwani just 13. And rest of the batters could not go to the double figures. Now it's gonna be a long handle. Just see fall of wickets, 59, a good start, but then there was a collapse, 62 for 2, 80 for 3, 95 for 4, and 105 for 5. A partnership of 21 runs between these two. Having 24 balls left. If they go with 10 runs per over, still they will cross 165. If they go with 12, I believe that is almost 170, 172. And that is what Captain Shirazwani did mention. We would love to go very close to 180 and just having a game on. और जितना ज़्यादा गेंदें यहाँ से मेहरान खेलेंगे, मौका भी है उनके पास आज शतक लगा सकते. 24 गेंदें हैं, अब निगाहें भी जमा ली है. अब क्या इंटेंट यहाँ से दिखाएंगे मेहरान लेफ्टी? Well, he just need to go after every ball now. You know, having got the lefty also on the other side, he can just hit the ball well. And having spinner on, Danish Kullu back, just 13 runs off his 2, no wicket. Here he gets ready to bowl to Mera lefty. And turns it away beautifully. The ball is running away, down to the deep final leg region. Luck not going. And Mera lefty just having the favor of the luck. 4 runs.
He just goes to 70. And this is a good start to the very over number 17, Saklan. और खराब गेंदबाजी हो रही है, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंदबाजी, और मेहरा लेफ्टी और लेग साइड में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पुल मारते हैं, वो जो हुक शॉट खेलते हैं वो कमाल खेलते हैं, और गेंदबाजी वैसी हो रही है। दानिश को लोग खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। Except Javed Jaddu, none other bowler has been pretty impressive so far. And let's see. That fine leg fielder now goes down to that backward square leg region deep. In goes Kulu. And just plays it on the onside. It's such a risky player. And he goes on to 71. Let's see. Adil 50. He's a flamboyant all-rounder. He's known for hitting biggies. And time for him to go for big ones. बिल्कुल, अगर इनके पाले में गेंद आएगी तो डिस्पैच करेंगे छक्के से। जो आग वो जो मिड विकेट का इलाका रहता है वहां से छक्के मारते हैं। क्या इसको क्या आदिल 50 को वैसी गेंद मिलेगी? Some changes being made on every ball. Wicketkeeper standing pretty close. In goes Danish. Oh, too low. The ball just kept low. That is what caught better of Adil 50 on that occasion. And is beaten. The run rate just under 8. In goes Kalu. This time he just plays the ball standing tall. There is a bit of a fumble, but that fumble is not going to give them the chance for going through for a second run. And Mera lefty. What an innings. That has been a very, very great innings. Impressive innings from the man. And this is the way why Prince 11 Pulwama find themselves at 132 for 5. अगर मैना लेफ्टी नहीं होते तो स्कोर बोर्ड पे नहीं होता। 132 5 विकेट के नुकसान पे और 71 रन है मैना लेफ्टी के। इस बार खेला है स्ट्रेट बैक टू बॉलर, पीछे खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑफ से और 1 रन मुकम्मल किया। इस ओवर में दानिश शुरू किया, अगर हम बात करें अच्छी गेंदबाजी की है, ज्यादा रन नहीं दिए इस ओवर में, 7 रन ही दिए 5 गेंदों में, लेकिन फिनिश ऐसे करना चाहेंगे। आदिल 50 सामने रहेंगे, फिनिश कैसे करेंगे? दानिश कुलू ऑलरेडी 2 हैट्रिक ले चुके हैं। ये देखिए उड़ाया है 6 रन के लिए डिस्पैच किया इस गेंद को। मैंने पहले ही कहा था ये रुकने वाले हैं नहीं, और फिनिश किया है छक्के के साथ। And you remember Dean Jones, late Dean Jones, he would say, going and gone. बिल्कुल, और वैसा ही किया है अभी आदिल 50 ने। 13 पे पहुंचे, 47 5 विकेट के नुकसान पे 17 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। फ्रेंड्स इलेवन पुलवामा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए, ये आप रिप्ले में देख सकते हैं। ये देखिए मिडल पे लिया गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। अब बचे हैं 3 ओवर, 18 गेंदें बची है। क्या 18 गेंदों में यहाँ से 40 के आसपास रन बनाएंगे? और अब यहाँ से तो फास्ट बॉलर को आपको बुलाना पड़ेगा। Count that over number 17. They just got 13 of the over. If they go with the same 13 of the remaining 3, still they will get 39, and that will just make them close 180. बिल्कुल, and that's gonna be a very good score in the semi-finals. बिल्कुल वो अच्छा स्कोर रहेगा, और वही कोशिश भी होनी चाहिए यहाँ से। अब तो फास्ट बॉलर को बुलाना ही पड़ेगा। अब सुपनर्स के साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि सुपनर्स ऑलरेडी अपने जो इनके जो 4 ओवर्स होते हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। अब यहाँ से अच्छा मौका है मैरा लेफ्टी के पास, क्योंकि सेट है। आप कोशिश करेंगे कि सेंचुरी तक पहुँचने की, और वही से अपने स्कोर को भी बढ़ाएंगे और अपने जो यहाँ से टीम के स्कोर को भी बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए मैरा लेफ्टी की। And here we have the fast front line bowler now, striking bowler into the attack. Adil has bowled 2 overs, just giving away 18 and no wicket. He's going to be faced by Mera lefty, who's batting on 72 or 49. Mera lefty, he just has to go for 28 runs to get to the century, and he will not be looking to go to there, and he will be just looking to get some more runs under the belt and for the team as well. Here goes Adil with a very long run up. This time plays the ball beautifully. Oh, one bounce over the mid-wicket region for 4. And it's a good start to the over number 18. And Mera lefty now knows that he has to praise arms and he has to use the acceleration. और ये देखिए कमाल का शॉट, और हाई बैकलिफ्ट के साथ ये शॉट खेला और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए इस गेंद को पहुंचाया। अब आदिल 50 और मेहरा लेफ्टी की जोड़ी मैदान में है। पहली गेंद पे चौका, क्या कमबैक रहेगा आदिल का?
Once again he moves in. Edge! No, I believe there was an edge, but that was a great ball. For a moment I thought there was some edge, but eventually that was a beauty. That was a very, very good ball. Mera lefty completely surprised with the bounce the ball had and the carry it got. It turns out to be a dot ball. Gets ready. This time, pulls it beautifully. Oh, that has gone a mile. That has gone flat as well, and that has gone out of the ground. That is a 6. What a shot from Mera lefty. Just watch it. Bang! Flat. Oh, a backward square leg region. And he's just going into the 80s now, 82 now. और क्या खिलाड़ी है मेरा लेफ्टी. जब जरूरत थी इस टीम को तब परफॉर्म किया है मेरा लेफ्टी. स्ट्राइक रेट देखिए, तब से खेल रहे. स्ट्राइक रेट 157 के आसपास है. 10 runs after 3 balls so far. This time beautiful shot, and the shot is so great to play. And if we have always in mind the likes of Mera lefty, he is always a treat. And especially when he's on a song. Today he's on a song and he's letting his bat singing. अगर यहाँ से आज शतक लगाएंगे, मुझे लगता है सबसे बेस्ट शतक रहेगा इस J&K Qualifiers लीग का. Absolutely. It's 150, and if he gets to the century, that will be one of the best hand runs of this league. क्योंकि इस शतक में अगर आप नजर जाए, जो इस शतक इन्होंने अभी जो पारी खेले उसमें सिंगल्स थे, डबल्स थे, चौके थे, छक्के थे. ये कमाल की पारी रही है. अब आदिल 50 क्या कुछ करेंगे ये बचे हुए 2 गेंदों में. Oh, that's a nasty ball. That's a wide. Way over the hand of the bowler. And quickly leg umpire just signaling that it's a wide. So the runs coming, I was telling you, 12 after over so far. Still 2 balls and 180 is loading. बिल्कुल 180 के आसपास नजर आ रहा है कि स्कोर जाएगा 180 के आसपास और 190 तक भी जा सकता है अगर ये जो बाकी जो अभी जो 2 ओवर्स बचे इसके बाद अगर उसमें अटैक करेंगे. अभी अटैक तो करना है और मेरा लेफ्टी के पास मौका है शतक लगाने का. और आदिल 50 भी अभी अच्छी पारी खेले, 13 पे पहुंचे, 9 गेंदों का सामना किया है. ये आप रिप्ले में देख सकते हैं. और बिल्कुल वहां से वाइड थी और 1 शॉट भी करा दिया. अब आप शॉर्ट गेंद तो अब आने वाली है नहीं क्योंकि वो नो बॉल होगी. एक शॉर्ट बॉल तो आई है, अब दूसरी आप नहीं कर सकते. Deep third man now brought inside the circle and plays it down to the middle. There is a misfield. Musin Radar or it's Danish Kallu just goes for a misfield. And Adil 50 just getting a single on to the strike once again. Mehran Pandit, Mehran lefty. 17 runs he require. And overall we have got 13 balls. He can go to that century. क्या शतक लगाएंगे आज. अगर यहाँ से शतक लगाएंगे सबसे बेस्ट पारी रहेगी. इनको हमेशा ये पारी याद रहेगी. This is going to be the innings to be remembered for eons and eons to come. Expole down the leg stump. That's surely going to be called a wide. And Mera lefty, what a cricketer. It's absolutely a very, very great talent for Pulwama. बिल्कुल क्या टैलेंट है ये. और आज सितारा उभर के आया है. आज इन्हें जो इनिंग्स खेली है हमेशा याद रहेगी. और जो फैंस है घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को, काफी खुश होंगे अभी जो परफॉर्मेंस दिया है मेरा लेफ्टी ने. इस बार खेला स्ट्रेट बैक से बॉलर, गोली की मानल गेंद जा रहे, क्या रोक पाएंगे वहां पे. और थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन दूसरा रन भी मुकम्मल किया. शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की. अगर हम यहां से बात करें 155 5 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर इख्तियार हो चुके हैं. फ्रेंड सलोमन पुलवामा टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए. And 16 of the over, 13 of the last, 16 of this very 18. And it's 1-5-5 for 5. I believe in the meantime we may have some replays of those last 2 wickets. For technical team is just hearing to us. They may just display those last 2 wickets on the screen. But what a game.
And Prince 11 Pulwama have been playing very well throughout the very first ball. The run rate just approximately over 8.5. It's almost 9. And if they go with around 20 runs, they will just crossing 170, 175. 12 balls left. और यहाँ से दानिश कुल्लू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. It may be a gamble. It may be a risk. It may be a very, very big risk. वो भी 19वां ओवर करा रहे हैं दानिश कुल्लू से. ये गैम्बल हो सकता है. यहाँ से रन्स भी पड़ सकते हैं और विकेट्स भी जा सकती है. And let's see what will be the approach of Adil 50. Here goes Kullu. Pulls it. Beg your pardon, he just smashes it. Oh, that has gone over the fence. 4 runs. That has gone quickly over the fence. This is what I was telling you. It may be a gamble. It may be a risk. In the replay, this one, you just find it just shuffling across and just making it go over that deep mid-off for 4. Adil 50. And that was a bit quicker, standing tall. And here we have the Chacha once again making his appearance to the ground. बिल्कुल आज हम मिस कर रहे थे इनको, लेकिन सेकंड इनिंग्स में काफी एंजॉय करेंगे कुछ मसरूफियत की वजह से अभी. Pardon! His He's knocked him over, and this is what I was telling you. This is going to be very, very, very great. Danish Kullu just signaling Adil 50 with a finger, just go back to the dugout. And this will be in the mind of Adil 50. He will definitely have him to bowl at. बिल्कुल जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तब आदिल 50 जो कंटेस्ट है अभी क्या वो जीतेंगे या नहीं, लेकिन अभी जो सेलिब्रेशन थी वो कमाल की थी. आप अगर ये रिप्ले में आप देख सकते हैं आदिल 50 जा रहे हैं. जो हमारे पास रिप्ले में आप देख सकते हैं वो जो सेलिब्रेशन दिखाई उन्होंने, लेकिन अच्छी पारी खेल के गए. 13 में 18, 138 की स्ट्राइक रेट. अच्छी पारी खेल के गए आदिल 50. Gamble on. Runs already going. Wicket already coming from Danish Kullu. And this is, I believe, somehow some relief. Only 4 after first 3 balls. ये देखिए गेंद पड़ने के बाद काफी नीचे रही. And not only it kept low, it just came in. It just surely came in. Deviation हासिल हुआ पड़ने के बाद अंदर आई गेंद. Just watch it beautifully once again at the replay. And it's just gone, caught in. See that. See that. This is going to be in the mind of Adil 50. बिल्कुल. ये इनके दिमाग में जरूर रहेगा. और जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे आदिल 50 तब क्या अगर दानिश कुल्लू के विकेट वहां से हासिल करेंगे तो जरूर इनको ये सेलिब्रेशन वापस दिखाएंगे. And out walks to the center Mr. Khan, Suhail Khan, handy all-rounder from Kangan, Pulwama. There we go, the replay of the wicket. Javed Jaddu getting the wicket of Abid Mir. That was high up in there and could not get the distance and held beautifully at the mid-wicket region. There we go. Good safe hands. Javed Jaddu just getting the wicket. This was, I believe, Yunus Butt. There we go. He was just plump in front of the stumps. No hesitation at all. डॉट गेंद इस स्टेज पे डॉट गेंद. कमाल की गेंदबाजी. 4 रन अभी तक दिए हैं और 2 गेंदें बचे. मुझे लगता है अगर इन दो गेंदों पे स्ट्राइक नहीं आई मैरान के पास, थोड़ा सा मुझे लगता है फिर जो 15 रन इनको बनाने थोड़ा बहुत मुश्किल होगा वो. This ball has been played beautifully. There will be a 2. And he just gets off the mark. 2 runs. और एक अच्छी खबर मैं कहूंगा मेहरा लेफ्टी के लिए कि इंडिविजुअल स्कोर के लिए नहीं जा रहे हैं. पता है कि टीम को जरूरत है, वरना एक रन भी ले सकते थे वहां पे. He's a team member. He just believes in the team's strength, team's success. He just plays for the team. And he's just on the other side, just needing 15 for a century. But he just believes that we need to get runs. This one keeping low. It's a dot ball. So the gamble working for Musin. Only 6 runs. And a wicket. बिल्कुल 161 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदें बची है. इन 6 गेंदों में क्या मेहरा लेफ्टी शतक मुकम्मल करेंगे. 15 चाहिए उनको. दानिश कुल्लू 5 मैचेस में 10 विकेट ले चुके हैं और क्या गेंदबाजी और इकोनॉमी काफी शानदार. 7.39 की कमाल की अभी तक इकोनॉमी रही है. 10 विकेट से मुझे लगता है उस फहरिस्त में जरूर आएंगे. लीडिंग विकेट टेकर्स के फहरिस्त में जरूर आएंगे. और And he's also going through a strong contender for the player of the tournament. बिल्कुल. Having hat-tricks, rather 2 hat-tricks. And he's got some runs as well. It's going to be the last over. Meron needing 15 to go through his century. Let's see how many runs Pulwama will pose in the last over. 9 fours, 4 sixes
85 of 54, strike rate of 157. Umar has caught the last over to bowl. Here is a pass ball. Played it beautifully down to the mid-wicket region. Only a single is gonna cruise. It's 162. Can they cross 170? Still 5 balls left. And Sohail Khan is also a good hitter off the ball. Eventually, as the right-handed batsman comes on the crease, we see some marshalling of troops. And we are live from Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar for the second semi-final. That was a quick ball, and eventually they go through for a single. The good thing that they are not just making the ball dot, still going for singles with every ball. And Mehran having 4 balls, he just needs 14 to get to his century. But he will be believing in just getting more runs for his team. और जो 19वां ओवर आता मुझे लगता है काफी रन्स कम हुए उस ओवर से, वो काफी क्रूशियल था वहां पे. That started with a boundary, then that was a good comeback. Adil 50 just bowled out, and only 6 runs came in that 19th over. That is always a very crucial. And way outside the off stump. No, it's not signaled as a wide. Mera lefty was thinking that it might be given, but eventually turns out to be a dot ball. He will be cursing himself. There you see in the replay. That is a wide this time. This time no hesitation at all. And that's a wide. But Saklan, there has been control today on the number of extras. बिल्कुल एक्स्ट्रास ज़्यादा दिए नहीं, और पता है कि मुकाबला बहुत ज़रूरी है जीतना यहाँ से, और गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही है. क्या वो एलिवेशन मिला, इस बार आउट होने का खतरा है. And a beautiful catch. Mehran lefty departs. He was having no option left for him except going big. And eventually has been held at the deep mid-wicket region, wideish mid-wicket. Musin gets to the catch, a very low catch. It was dipping, and eventually got the better of the catch, and lefty departs. What a knock! What a beautiful knock! 86 of 57. It's 6 down now. क्या पारी खेल के गए, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है मेहरान लेफ्टी को, और आज दिल जीत लिए. जो पारी इनकी रही है वो कमाल की. अगर ये खड़े नहीं होते तो मुझे नहीं लगता यहाँ से ये स्कोर दर्ज होता स्कोरबोर्ड पे. He is getting standing ovation from both the sides, from both the dugouts. His own dugout of Pulwama and the dugout of Pattan Pirates. That's a good sportsman spirit. You know, playing well and now getting the welcome from both the sides. Seeing the replay, he caught only the elevation. And eventually a good catch, if we can see close. Oh, that's a great catch. That is indeed a great catch. ये 2 गेंदें काफी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है. And Faisal, the new man, just comes down to the center. And we've got only 2 balls left. 164 for 7. Down the track he goes. And it will be a run out. It will be a run out. Sohail Khan was just running away. He was just dying to be on the strike. Eventually Faisal departs for a run out. It's 7 down now. I believe 8 down. And we have got the last ball, Saklan. और आखिरी गेंद होगी, और क्या सोहेल खान स्ट्राइक पे रहेंगे? जी हाँ, सोहेल खान स्ट्राइक पे रहेंगे. चाहेंगे कि एक छक्का लगाए, यहाँ से आए एक चौका लगाए. फैसल 0 पे जा रहे हैं, एक गेंद का सामना किया, रन आउट हुए. और फ्रेंड्स पुलवामा की गेंदबाजी कैसे रहेगी, आज देखने वाली बात होगी जब भलेबाजी करने के लिए आएगी पटन पायरेट्स की टीम. अब फैजान आए हैं खेलने के लिए. यहाँ पर प्ले में देख सकते हैं रन की मांग, रन था नहीं वहाँ पे, और अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, और वहाँ से गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की और आउट हो गए. यहाँ पर प्ले में देख सकते हैं वहाँ पे थ्रू आया गेंदबाज के हाथ में और कोई गलती नहीं की. अब क्या आखिरी गेंद पे सोहेल खान कुछ करिश्मा करेंगे, एक छक्का लगा पाएंगे? जरूरत है एक छक्के की.
क्या लगा पाएंगे? टॉप एज लगा है, क्या वो छक्का है? अंपायर के इशारे का वेट किया जा रहा है। चौका, जी हां, और फिनिश किया है इस पारी को। अगर हम फ्रेंड्स 169 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल्स में जगह बनाने के लिए और 2-2 हाथ करने के लिए एमएलए जिमखाना के साथ वो मुकाबला करेगी। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी तो पटन पायरेट्स को चाहिए 169 रन। 19वां ओवर जो था वो काफी शानदार था ना। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पुलवामा का जो प्लेइंग यहाँ से जो अभी बल्लेबाजी रही है उनकी, जावेद मलिक 24 और मेहरान पंडित 86 की शानदार पारी। परवेज नजार 1, शिराज वानी 13, आबिद मीर 4, यूनुस भट्ट 6, आदिल 50 18, सोहेल खान 6, फैसल फारूक 0 और मीर फैजान 0 पे नॉट आउट रहे। और यहाँ से 169 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये अगर हम पटन पायरेट्स की गेंदबाजी की बात करें, आज दिन था जावेद जडू का, आदिल अहमद ने 3 में 34, उमर केपी 3 में 26, तो फास्ट बॉलर ज्यादा चले नहीं। जुबैर अहमद 2 में 27, जावेद जडू 4 ओवर 18 रन और 3 विकेट्स, ये काफी क्रूशल थे और अच्छे से इस पिच को We are having the replay of the last 3 wickets, I believe. There we go, wickets at your screens. This was Adil 50, and there were some words being exchanged between the two. This was Mehran lefty, only elevation, no distance. A beautiful catch in the end. That was a beautiful catch, and I believe that was the run out. See Sohail Khan just streaming in for the side to go in. And a good presence of mind by the wicketkeeper, just throwing the ball to his bowler, and he just swept the bails off. So the news, Prince 11 Pulwama has completed their first innings after winning the toss, batting first. They scored 168 for 8, and the score to be chased down, the target set for Patan Pirates is going to be 169 in their allotted 20 overs. We'll be back after a gap of around 10 to 15 minutes. Till then, you enjoy your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.